Okay, welcome to lecture 19 of natural language processing. So today we will discuss starting with in general discussion of how to do or how to solve NLP task in general. In other words, we'll be discussing a framework in which you will be able to categorize various tasks of NLP in various categories, as we will see. And then later on, we will move on to two specific applications which we have not discussed before, which is POS tagging and named entity recognition. Both of these are examples of sequence labeling tasks. So, so as I said, we'll start with kind of an overview of how we solve problems in NLP using our models that we have already discussed, primarily the transformer. And then we'll specifically talk about POS tagging and named entity recognition. So, any questions? All right. So we have discussed the transformer and we had also discussed two language modeling tasks. Uh, one was the causal or left to right language modeling, and the other was the masked language modeling. And we also discussed their corresponding transformer architectures. And both of these models we trained on our language, large corpus of our language or multiple language, if it is a multilingual language model. And the training was what is we called as self-supervision. So in other words, we do not need, so no need for external annotation. So labeling or labels are already available in running text. And in the case of causal language modeling, we predict the next word given the preceding context or the preceding words or preceding tokens in general. So we predict the next token given the preceding tokens. And obviously, if you have a large corpus, you already have that next token available in your data set and you have the preceding tokens, so you can train using that. And the training, of course, is predicting or find or learning a distribution over the next token. So the total number of tokens, of course, the total possible number of tokens is equal to the vocabulary size. So that was for causal language modeling. For masked language modeling, we were given a sequence of words, and for each word, we were able to. So in other words, in masked language modeling, to train, we actually mask a word in a sequence of words, and then we try to predict what was masked. So we, again, there we already know the true value. Okay? And we distinguished these two models and we gave them an additional name as well. So the causal language model or the causal language model based transformer is called a decoder. So why is it called a decoder? Because we can use it to predict one token at a time, so given preceding tokens, and we can do it iteratively, meaning that once you have predicted one token, that token goes back into your input stream, and then we predict the next token. And that goes back to the input stream, then predict the next token. So you can generate text. So this process of generation from a given sequence is in general called decoding. Okay?
So of course, this was a causal transformer. And then we also talked about the encoder. So encoder basically was used to, uh, you can say, build a representation for each token in a sequence. ठीक है? And this representation can then, I mean, of course, we train this using mass language modeling, but at the end of the day, what is happening is you have a representation for each token. So that representation, then of course, you can use it to make, uh, you can use it for various applications. And this is called a encoder. So given a sequence of words or tokens, we get a representation for each token in that sequence. And by applying some additional tokens like CLS token at the start, you also get a representation, or you can also get a representation for the entire sequence. Okay. So this was called a encoder. So now, we also briefly talked about the process of training and using such models. So in general, we have two steps. We have pre-training and then we have post-training, or post-training, or post-tuning, you can say, slash post-tuning. So two-step process. So pre-training is your language model that we saw above. It could be a causal language model, it could be a mass language model, and we have trained it on large amounts of data that we already have. And this training has equipped the model with lots of information about the language. So semantics, syntax, world knowledge as well, uh, pragmatics, discourse, all of that it has already learned if you have given it a large amount of data. And as I said, all these large language models are freely available. You can use them and they have been already trained on large amounts of data. So this is pre-training. So post-training, there are actually three different ways of post-tuning or training. The first one is fine-tuning, which by the way is training, is a way of training. So kind of ये terminology जो है ना ये थोड़ी सी इतनी precise नहीं है. If you want to be very precise, तो it's not like that. So preciseness नहीं है, but you need to understand कि क्या हो रहा है, and we will discuss that. So this is this is fine tuning, which we had already discussed earlier briefly, and we'll discuss today. And then what is known as in context learning. And this is mostly a tuning thing. It's not really training. Of course, there is an option for in context learning with training as well. वो probably हम शायद discuss नहीं करेंगे इस course में. But mostly it is tuning. और यही तरीका जो मोस्टली आप लोग यूज करते हैं. आप जीपीटी पे जब जाते हैं, आप उसको एक कॉन्टेक्स्ट देते हैं. इट सिंपली यूजेस दैट कॉन्टेक्स्ट टू आंसर योर क्वेश्चन. यू आर नॉट गिविंग इट एनी न्यू लेबल डेटा सेट. सो दिस इज एक्चुअली इन कॉन्टेक्स्ट लर्निंग, और ये हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे कपल ऑफ लेक्चर्स फ्रॉम नाउ. ठीक है. एंड देन देयर इज अनदर पोस्ट ट्रेनिंग विच इज यूजली डन again by these LLM developers, and they can be done by end users like us as well. And this is called what is known as preference alignment. Okay, so this is again kind of tweaking the outputs of your large language model, and usually in the case of in context learning. So मतलब you tell your model कि मैंने ये चीजें लेनी है for this particular type of input. For example, let's say आपने गार्ड रेल्स लगानी है अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल में कि वो बॉम्ब्स के बारे में ना बताए, टेररिज्म के बारे में ना बताए, या कोई बैंड एलिमेंट्स या बैंड एक्टिविटी के बारे में ना बताए, तो यू एक्चुअली देन डू प्रेफरेंस अलाइनमेंट. उस तरह के क्वेश्चन उसको देते हैं एज कॉन्टेक्स्ट और इनपुट.
एंड देन टेल इट के वो अपने डेटाबेस से विच इज प्री ट्रेंड से जो करेक्ट आंसर वो ना दे, कुछ और दे दे कि आई एम नॉट अलाउड टू डू दिस, सो दैट्स यूजिंग प्रेफरेंस अलाइनमेंट। तो ये भी हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट एज आई सेड टुडे प्राइमरली फाइन ट्यूनिंग, ठीक है। एंड इन ऑल ऑफ दिस केसेस what is happening if you think in terms of machine learning is we are doing transfer learning. How? Because originally you have trained your model on large amounts of data, language data, and we did pre-training. Pre-training में काफ़ी चीज़ें उसने learn कर ली, generic चीज़ें learn कर ली, and oftentimes those generic चीज़ें since you have trained with large amounts of data वो काफ़ी कुछ बता सकता है. But you also need to do post training maybe on some specific or on specific tasks or maybe on more narrow domains. तो वो पोस्ट ट्रेनिंग में आएगा जिसमें फाइन ट्यूनिंग है, जिसमें कॉन्टेक्स्ट लर्निंग है विच इज यूजली ट्यूनिंग, और प्रेफरेंस अलाइनमेंट विच इज आल्सो यूजली ट्यूनिंग, और ऑफ कोर्स उसमें भी एक ऑप्शन है ट्रेनिंग वाली. तो रिमेंबर ट्रेनिंग और ट्यूनिंग में मैं फर्क क्या डाल रहा हूँ. तो बेसिकली ट्रेनिंग, so update of parameter, and tuning, so no update of parameters. ठीक है. तो ये डिस्टिंक्शन इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है, बट आई थिंक यू नीड टू अंडरस्टैंड के इस तरह के वेरी वैरायटी है आपके पास. वो पैरामीटर्स क्या हैं, वी हैव डिस्कस्ड दिस इन द लास्ट लेक्चर. फॉर a large language model they are the parameters for the w's that we had for the uh, attention mechanism, for the feed forward layer, the gamma and beta for the layer norm, and if you're also doing updating the embeddings and also the embedding matrices. तो ये सारे पैरामीटर्स हैं. ऑफ कोर्स हाइपर पैरामीटर्स भी होते हैं इन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स. तो हाइपर पैरामीटर्स में इन एडिशनल चीज़ें आ जाएंगी, नंबर ऑफ लेयर्स, नंबर ऑफ अटेंशन हेड्स, आपने एक्टिवेशन यूनिट्स कौन से, फंक्शंस कौन से यूज़ किए हैं, रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट है, आप कोई और कुछ नॉर्मलाइजेशंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ऑप्टिमाइजेशन किस तरह कर रहे हैं, मोमेंटम से कर रहे हैं, अडाप्टिव कर रहे हैं, सो ऑन. सो ऑल ऑफ दीज वुड हैव एडिशनल पैरामीटर्स व्हिच वुड बी कॉल्ड एज हाइपर पैरामीटर्स. ठीक है. So do you understand the framework that I've laid out so far? So we have pre-training, which is trained on large amounts of data, usually language training, but along that language training, it has learned a lot of stuff. But once we want to apply it to our specific task or application, we usually do post-training or post-tuning. So उसमें एक fine tuning है, which is usually, as I said, training. बट ये पहले नाम आ गया था तो इसको फाइन ट्यूनिंग कह रहे थे, बट इसमें अडाप्ट होते हैं पैरामीटर्स. एंड देन ऑफ कोर्स इन कॉन्टेक्स्ट लर्निंग एंड देन प्रेफरेंस अलाइनमेंट, ऑल ऑफ दिस इज पोस्ट ट्यूनिंग और पोस्ट ट्रेनिंग. ठीक है. ओके. So now let's kind of categorize the classes of application that we have in NLP. So in general, we have an input, which is X, and we have an output, which is Y. ठीक है. X and Y in general can be scalars, can be vectors, or they can be sequences. Sequence को भी आप vector से represent कर सकते हैं, but in a sequence the order is important. ठीक है. So X, Y, so they can be scalar, they can be vectors, or they can be sequences. ठीक है. So now let's see the options for each of these. So let's start with, let's say, so X, let's say, is scalar, and Y is scalar. ठीक है. So obviously this is a simple regression problem, 1D regression problem. ठीक है. X आपका input भी scalar है, Y भी scalar है.
तो ऑब्वियसली ये इवन लीनियर रिग्रेशन टाइप की चीज़ बन जाएगी. सो नॉट रियली एनएलपी टास्क, इसमें कोई खास एनएलपी टास्क नहीं आती. ठीक है. सो सो सिंपल टास्क ऑफ प्रिडिक्शन, सॉरी रिग्रेशन कह लें. ठीक है. So let's look at another one. So let's say x is scalar, y is a uh, vector भी ले सकते हैं, but again let's say since we are focusing on NLP, I would say a sequence. So input आपके पास scalar है और output आप sequence generate कर रहे हैं. Input let's say simply telling you some guidance. By the way, scalar ये null भी हो सकता है. Of course, if you want to generate something that is, remember output y is a sequence, which means that you are generating something. ठीक है. So input is just telling you कि आपने generate क्या करना है. So null भी हो सकता है if you already have a network that is trained and it can generate stuff. ठीक है. तो of course is if so for example uh, so again I'm just trying to highlight some applications. So applications में for example scalar है तो maybe 1 2 3 4 may tell you different languages. One means Urdu, two means English, three means French. So one let's say English, two Urdu, and then y is language generation. ठीक है. सो इनपुट हमने इसको बताया कि मैंने इनपुट किया विच टेल्स द नेटवर्क के मैंने इंग्लिश जनरेट करनी है, तो वाई वो वन बाय वन इंग्लिश के वर्ड जनरेशन करने शुरू कर देगा. टू देंगे तो वो उर्दू जनरेट करने शुरू कर देगा. ठीक है. सो दैट इज वन यू कैन थिंक ऑफ एन एप्लीकेशन. सो सिमिलरली इस तरह की यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ अदर एप्लीकेशन. लेट्स से जो स्केलर है वन है, you can think of music for example, genre of music. So for example, I'm not popular, I don't know many genres, so maybe for example rap का एक लफ्ज मुझे आता है, to for example rock and roll for example, and so on. And then why music generation, obviously you must have a pre-trained model for this. ठीक है. आपने सिंपली उसको बताया है कि मैंने क्या जनरेट करना है, वो जनरेट करनी शुरू कर देगा. रिमेंबर द इनपुट इज जस्ट टेलिंग यू कि ये मुझे जनरेशन चाहिए, ज्यादा डिटेल नहीं है, जॉनरा बस चाहिए. सो अगेन इन बोथ ऑफ दिस एप्लीकेशंस आप इसको थोड़ा सा बोर्ड इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं. सो एक्स कैन बी ए वेक्टर, एक्स कैन बी ए वेक्टर. इन अदर वर्ड्स वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इनपुट. सो फॉर एग्जांपल म्यूजिक जनरेशन में है तो आपने एक वेक्टर बना लिया है दैट डिस्क्राइब्स व्हाट यू वांट टू जनरेट. ठीक है. मतलब आपने उसमें डिटेल्स बता दिए हैं, मुझे ये इंस्ट्रूमेंट, अगेन ए रिप्रेजेंटेशन फॉर व्हाट यू वांट टू जनरेट. अब वो नेटवर्क को आपने फीड किया एंड यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन इट विल जनरेट एन अप्रोप्रिएट म्यूजिक फॉर यू. या अल्टरनेटिवली जैसे हमने लैंग्वेज की बात की, तो ये एक्स माइट बी ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए टास्क. ठीक है. तो लेट्स से एक्स इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इनपुट दैट यू वांट टू समराइज. ठीक है. सो एक्स पूरा आपने एनकोडर से, एक्स के थ्रू आपने एनकोडर से आपने पूरा एक इनपुट पैसेज दिया और उसकी रिप्रेजेंटेशन एक्स आ गई. अब आपका जो जनरेटर है, डिकोडर है, वो उसकी समरी डेवलप कर रहा है. या फॉर एग्जांपल आपके पास इनपुट एक्स जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन एनकोडर से आपने एक लैंग्वेज की ले ली, लेट्स से इनपुट इंग्लिश में थी, वो डिकोडर जो था वो जर्मन था, तो वो वन बाय वन जर्मन लैंग्वेज ट्रांसलेशन हो जाएगी आपकी. सो मशीन ट्रांसलेशन and music generation with more details of the input can be done using this kind of setting. So input now is an encoded version of what you want. So इस केस में usually
we will need an encoder-decoder architecture. तो पहले आपके पास एक encoder होगा, मे बी ए ट्रांसफॉर्मर encoder, और बाद में आपके पास डिकोडर होगा, अगेन ए ट्रांसफॉर्मर डिकोडर. तो encoder क्या करेगा, लेट्स से आपने इंग्लिश में पूरा उसको पैसेज दे दिया, एंड पे जो CLS टोकन है, इट वुड बी ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंटायर पैसेज इन इंग्लिश. अब ये डिकोडर में इनपुट होगा, प्लस जो पहला टोकन वो जनरेट करेगा जर्मन में, दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, चौथा करेगा. सो यू गेट ए ट्रांसलेशन ऑफ इट. ठीक है. बाय द वे, ये वाली सेटिंग एक्स कैन बी, जैसे मैंने वेक्टर कहा, सो एक्स कैन बी ए सीक्वेंस एज वेल. यूजली इट इज ए सीक्वेंस. इनपुट आपके पास जो होता है वो पूरा सीक्वेंस होता है, और पहला जो इनकोडर है उसको एक्स एज ए वेक्टर बना देता है, रिप्रेजेंटेशन बना देता है. ठीक है. सो so let's say आपके पास रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी है, तो देन यू डोंट नीड द एनकोडर, यू कैन सिंपली यूज द डिकोडर, और उसमें ये एक्स एज ए रिप्रेजेंटेशन इनपुट दे दें, और वो फिर जनरेशन शुरू कर देगा. ठीक है. सो बेसिकली एनकोडर produces the vector x, and x inputs into decoder, which then generates y. ठीक है. वन टोकन एट ए टाइम. तो इस तरह आपके पास फॉर एग्जांपल समराइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रॉब्लम कर सकते हैं, ट्रांसलिटरेशन की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, पैराफ्रेज जनरेशन की कर सकते हैं, एंड सो ऑन. ठीक है. अब इसी में थोड़ी सी एक आ, सो इसी में हमारे, अब मैंने कहा था एक्स स्केलर है, एक्स वेक्टर है, और एक्स इन जनरल कैन बी ए सीक्वेंस आल्सो, विच हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. ठीक है. सो एक्स लेट्स से सीक्वेंस है, और वाई लेट्स से एक स्केलर है. ठीक है. एक्स सीक्वेंस है, वाई स्केलर है. तो ये प्रॉब्लम आपके पास, आप जो हमारे पास फॉर एग्जांपल इनकोडर आर्किटेक्चर, उससे आप सॉल्व कर सकते हैं. बाय द वे, ये क्या प्रॉब्लम होगी, फॉर एग्जांपल ऑल टेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ दिस टाइप. इनपुट आपके पास कोई ट्वीट है या एक्स का स्टेटस है, इट गोज थ्रू द नेटवर्क, एन एनकोडर, एनकोडर जनरेट्स रिप्रेजेंटेशन, उस रिप्रेजेंटेशन के आगे आपने क्लासिफिकेशन हेड लगाया हुआ है. क्लासिफिकेशन हेड गिव्स यू ए स्केलर, कि वो कुछ क्लास लेबल में आ रहा है. ठीक है. सो दिस वुड बी क्लासिफिकेशन. एंड ऑफ कोर्स क्लासिफिकेशन हमने जैसे पहले डिस्कस किया, यू हैव टन्स ऑफ क्लासिफिकेशन एप्लीकेशंस. तो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन कैन बी टॉपिक क्लासिफिकेशन, ईमेल स्पैम क्लासिफिकेशन, emotion classification, sentiment classification, genre classification, authorship classification, and so on. ठीक है. So all classification problems fall in this case. So this type of problem sometimes आपको इसको इस तरह भी लिखा जाता है कि sequence classification problems है, because input sequence है. ठीक है. So input is a sequence, output is a scalar. ठीक है. अब हम देखते हैं x इनपुट जो है वो सीक्वेंस ही है, y भी एक सीक्वेंस है. ठीक है. इसमें हमने ऊपर भी कुछ एग्जांपल्स देख ली थी. तो इसमें ऑफ कोर्स मच ऑफ जो आपका NLP की एप्लीकेशन सारी इसमें आती हैं. बट इसमें एक डिफरेंस है दैट आई जस्ट वांटेड टू हाईलाइट, विच माइट इम्पैक्ट योर मॉडल. सो ऑफ कोर्स इसमें ऑफ कोर्स मशीन ट्रांसलेशन पहले मैं लिख लेता, मशीन ट्रांसलेशन, समराइजेशन, सो पैराफ्रेज, जनरेशन. ठीक है.
एंड ऑल्सो वो पीओएस टैगिंग जो हम आज डिस्कस करेंगे, टैगिंग, एनईआर, ऑल ऑफ दीज आर सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल्स। इनपुट भी सीक्वेंस है, आउटपुट भी सीक्वेंस है। ठीक है। मशीन ट्रांसलेशन में इनपुट लैंग्वेज डिफरेंट है, आउटपुट लैंग्वेज डिफरेंट है। बाय द वे इसमें और एप्लीकेशन भी हैं, ट्रांसक्रिप्शन भी आ जाएगी, तो स्पीच रिकग्निशन भी आ जाती है। ठीक है। ट्रांसलिट्रेशन भी आ सकती है। ठीक है, एंड सो ऑन। इसमें एक डिस्टिंक्शन मैं करना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज इफ द इनपुट एंड आउटपुट सीक्वेंस लेंथ आर द सेम, और so input x and y are of same length, so ये कहाँ किस एप्लीकेशन में होगा, इनपुट एंड आउटपुट आर ऑफ द सेम लेंथ? तो कुछ एप्लीकेशन मैंने ऊपर लिखी हैं, किसमें ये सेम लेंथ की होंगी? जो इनपुट टोकन भी उतने ही होंगे जितने आउटपुट टोकन होंगे। so ऑब्वियसली इसमें पीओएस टैगिंग की प्रॉब्लम है, एनईआर की विच विल डिस्कस, एंड ऑल्सो फॉर एग्जांपल स्पीच रिकग्निशन। इफ यू हर टोकन का आपने स्पीच का टोकन डिस्कस करना है, तो स्पीच रिकग्निशन भी इसमें आ जाएगी। इवन आपकी क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन भी इसमें आ जाएगी। तो स्पीच से टेक्स्ट आ रहा है आपके पास, तो ट्रांसक्रिप्शन इज स्पीच टू टेक्स्ट, एंड स्पीच रिकग्निशन इज स्पीच टू, सॉरी, ट्रांसक्रिप्शन इज टेक्स्ट टू स्पीच, sorry, transcription is speech to text, and speech recognition is also speech to text. Actually, both are the same thing. Mm. But there are also many applications in which x, y are not of same length. तो इसमें ऑफ कोर्स कौन सी एप्लीकेशन? मशीन ट्रांसलेशन। इनपुट लैंग्वेज और आउटपुट लैंग्वेज की लेंथ जरूरी नहीं सेम होगी, ऑफ कोर्स टोकन्स भी इनके डिफरेंट होंगे। समराइजेशन में बाय डिफॉल्ट आपकी डिफरेंट होगा, पैराफ्रेजिंग में डिफरेंट होगा। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है। So, so this framework that I mentioned, where you look at the input and you look at the output and see whether the input is scalar, vector, or sequence, and you look at the output whether it's scalar, vector, or sequence, you can categorize various NLP applications and put them in one or more of these categories. ठीक है? So, जैसे टेक्स्ट क्लासिफिकेशन की हमने बात की, फॉर एग्जांपल। ठीक है। So, in text classification, X can be a vector, जैसे TF-IDF है, for example. X can also be a sequence, but Y is always a scalar. ठीक है। And usually Y as a vector, आप for example language generation में या क्लासिफिकेशन में इसको आप वेक्टर भी ले सकते हैं। रिमेंबर, जब आप सॉफ्ट मैक्स करते हैं आपके आउटपुट में एक वेक्टर आता है। ठीक है ना? तो यू कैन थिंक ऑफ दैट एज ए वेक्टर एज वेल एज ए स्केलर। और कोई आपकी एप्लीकेशन में जिसमें पूरा वेक्टर ही आपका रेलेवेंट है, वो भी आप इस तरह जनरेट कर सकते हैं। आई कांट थिंक ऑफ एन एप्लीकेशन राइट नाउ, मे बी यू वांट टू गेट एन रिप्रेजेंटेशन फॉर समथिंग विच इज अ कंप्लीट वेक्टर। ठीक है, इनपुट आपके पास सीक्वेंस है, आउटपुट वाई इज ए रिप्रेजेंटेशन, सो आई थिंक दैट इज पॉसिबल। तो लेट्स से एक्स आपके पास एक सीक्वेंस है, लेट्स से ईजी ए सेंटेंस, और वाई इज a vector which is a representation of the sentence. ठीक है। So in this case, x is a vector input
और x इज ए सीक्वेंस, y इज ए वेक्टर। ऑफ कोर्स ये एनकोडर ट्रांसफॉर्मर जो आपका है, जो हमने मार्क्स लैंग्वेज मॉडल बेस्ड ट्रांसफॉर्मर डिस्कस किया था, वो ये दे देगा आपको। ठीक है। ओके। एंड देन ऑफ कोर्स x कैन बी स्केलर, x कैन बी वेक्टर, हमने डिस्कस कर लिया। एंड y कैन बी ए स्केलर, y कैन बी ए वेक्टर, एंड y कैन बी ए सीक्वेंस। ठीक है। So this would kind of bring all your applications together. So once you have an application, you need to now decide कि आपने encoder only मॉडल यूज करना है, डिकोडर only मॉडल यूज करना है, या encoder डिकोडर मॉडल यूज करना है। ठीक है। एंड जो आपने ऊपर सेटिंग डिस्कस की है, उससे आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कौन सा चलेगा आपका। So for example, when you are getting a representation for a sequence, so encoder model will be fine. When you are doing text classification, encoder model will be fine. But when we are trying to generate something, then decoder model will be required. So let's say आपके पास आपने समराइजेशन करनी है, तो आपने पहले समरी जो टेक्स्ट समराइज करना वो इनपुट दिया, और बाद में फिर आपने डिकोडर चला दिया। सो दैट कुड बी डन बाय जस्ट वन डिकोडर। But some people say that you can first run it through an encoder and then send it to the decoder. So that's also possible. तो जितनी भी आपकी जनरेशन की प्रॉब्लम्स है, वो सिंपल डिकोडर से भी हो जाती हैं और एनकोडर डिकोडर से भी हो जाती हैं। बट जो सिंपली जो प्रॉब्लम्स हैं जिसमें क्लासिफिकेशन कर रहे हैं या कोई रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं, दैट विल ओनली बी डन यूजिंग ए एन एनकोडर। ठीक है। सो जनरेशन प्रॉब्लम्स, सो प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड by both decoder only and encoder decoder। ठीक है। यूजली इनकोडर डिकोडर हम वहाँ यूज करते हैं जब आपके पास इनपुट और आउटपुट सीक्वेंसेस की लेंथ डिफरेंट है और इनपुट और आउटपुट डिफरेंट डोमेन से आ रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल मशीन ट्रांसलेशन की बात हो रही है, तो इनकोडर एक लैंग्वेज में होगा, डिकोडर दूसरी लैंग्वेज में होगा, तो वहाँ इनकोडर डिकोडर यूज करेंगे। But let's say if you have trained a decoder on all languages, maybe you can put it in that decoder, वही आपको generate कर देगा। So that in that case, what is happening is in context learning हो रही है आपकी। जिस तरह आप जीपीटी यूज करते हैं, आप कुछ मैसेज देते हैं, उसको कहते हैं कि इसको मुझे ट्रांसलेट कर दें, तो वो ट्रांसलेट कर देगा। तो रिमेंबर, जीपीटी इज ए डिकोडर ओनली मॉडल। ठीक है। बट एज आई सेड, सो इन कॉन्टेक्स्ट लर्निंग थोड़ा सा हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमारा फोकस है फाइन ट्यूनिंग पे, वेयर यू अडॉप्ट द पैरामीटर्स। ओके। सो एनी क्वेश्चंस? So this summary is important to keep in mind whenever you are building an NLP application or thinking about an NLP application. Input क्या है, output क्या है, whether scalar, vector or sequence. ठीक है। And then आपने encoder model only use करना है, decoder only use करना है, या encoder decoder करना है। And then of course transfer learning हर जगह हो रही है, और fine tuning कर रहे हैं, तो we will adopt network using our own data. In context learning कर रहे हैं, तो we are just प्रोवाइडिंग अ प्रॉम्प्ट, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। वो प्रॉम्प्ट से वो खुद ही एडजस्ट कर रहा है अपना नेटवर्क। एंड अगेन फॉर प्रेफरेंस अलाइनमेंट, उसमें भी हम इनपुट आउटपुट पेयर्स दे रहे हैं, नॉट जस्ट ए प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट के साथ इनपुट आउटपुट पेयर्स भी दे रहे हैं, सो दैट वी कैन अलाइन द आउटपुट विद द प्रॉपर आउटपुट दैट वी डिजायर। ओके। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट, ओके, एक मैंने ऊपर बताया था कि so there was this problem where x was a sequence and y was also a sequence। ठीक है। and both x y are of same length। ठीक है। so इसमें जो दो पॉपुलर प्रॉब्लम्स हैं, which were more popular actually in the older days, because ये
टास्क सॉल्व होती थी कॉमनली, बट आजकल थोड़ी सी कम होगी, बट दे आर स्टिल एप्लीकेबल एंड दे डू हैव सम इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस. One is the POS tagging task and the other is named entity recognition task, NER task. In both of these cases, the input and output streams are of the same length. So let's discuss these now. Uh, okay, so maybe I can go to the slides so that we can move a bit more quickly. Any questions? Okay. By the way, ये problem जो है ना, this is also sometimes called, both of these problems are also called sequence labeling problem. ठीक है? As we will see, कि आपने हर word को एक label देना है. So the first task that we are going to discuss is part of speech tagging. ठीक है? POS tagging कहते हैं. So what is a part of speech? So part of speech is a specific function that a word plays in a language, and every language has some well-defined part of speech. And for writing proper, grammatically correct sentences for that language, you need to follow some simple rules so that uh, we use a proper part of speech at a proper location in a sentence. ठीक है? And part of speech of languages has been studied since, I would say, prehistory time, as mentioned in these historical notes. And various part of speech have been determined over the years by linguists for various languages. And of course, different languages may have different parts of speech, but there are some part of speech that are common across all languages. ठीक है? So usually about 7, 8 part of speeches are common across multiple all languages. And you can think of part of speech as word classes. So we want to determine which class a word belongs to. ठीक है? So generally there are two in all languages there are two classes of words or two types of parts of speech. One is called an open class and the other is a closed class. So what is the difference between the two? So closed class words have fixed membership, meaning that the words that belong to this class do not change with the evolution of the language or with time. ठीक है? So if you think about English, so these are usually function words, and in English you can think of part of speech like preposition. You can think of part of speech like determiners. So these do not change. So determiners का जो number of possible words in the class determiner remains the same. उसमें कौन से हैं? D है, A है, and so on. A है, N है. Similarly, prepositions में besides, under. So these words do not change, or these classes do not change, and we do not get new words in these classes. So these uh, classes are called closed classes. And then we also have open classes. So pronouns are also closed classes. So prepositions, as we have already mentioned. So open class words are those whose membership can change with the evolution of the language. And of course, in this case, we have classes called nouns, for example, names of people, names of companies, and names of things. These would change, right? Similarly, verbs, adjectives, and adverbs also typically change. So new adjectives आ जाते हैं that are able to characterize nouns. So adverbs आ जाते हैं that are able to characterize nouns and verbs, and so on. So these are usually called content words. So
Closed class words are called function words because they perform specific functions in a language, and content words usually contain greater meaning and they do vary with the evolution of the language. So, for example, iPhone was is now considered a noun, which was not even in the lexicon, let's say 20 years from now, before today. And if, for those who are interested in language and linguistics, you might see news items at the end of every year. Oxford English Dictionary and other major English dictionary, they usually vote for the best new word. So नए words आते रहते हैं dictionary में. So top new words that were added in that year are usually voted upon and then added or kind of declared as winner for that year. ठीक है, तो इस तरह के नए वर्ड्स आते रहते हैं. वर्ब्स में भी आएंगे, नाउन्स में भी आएंगे. इंटरजेक्शन ऑफ कोर्स इज obviously cultural, it will change with time and so on. So this slide basically gives you some definition and examples of open class and closed class words. So I think I will go over this. I will skip this. In other words, so आपके पास English में closed class preposition part of speech कौन से हैं? Prepositions हैं, pronouns हैं, conjunctions हैं, and so on. Determiners हैं, and open class में of course noun, verbs, adjectives or adverbs. ठीक है? And you already know the definitions and examples of these. So what is part of speech tagging? So part of speech tagging is given a sequence of words. We want to generate a sequence of tags for each of those words. So in other words, we want to generate a label for each word in that sequence. Okay? So why is this problem difficult and why do we want to do this? Because usually words can belong to multiple part of speech. And we want to know from the context which part of speech is being referred to in this particular sentence or running text. So for example, in this slide, you can see the word book. So book can be a verb, book can be a flight as well. Book can be so book a flight. So basically, which is asking it to this is a verb, and then the book which you read actually, which is a noun. ठीक है? So part of speech tagging, let me go back. So X is a sequence, Y is a sequence, both are of the same length. So if I want to, so for so you have a sequence of words, and for each word you can take on an output uh, Y. So let's say Y is one output. So that one output would come from the set of possible part of speech. So for example, noun, verb, adjectives, and adverbs. Of course, this is all open classes, so you'll have others as well. Okay. So हर word के आगे हमने इस तरह के so preposition, pronoun, and determiner, and so on. So let's say if I have a sentence, I live in Lahore. तो what I would like is I के बाद मुझे पता होना चाहिए ये pronoun है. ठीक है. Live is a verb. ठीक है. In is basically a preposition, and Lahore is a noun. ठीक है. So given an input sentence, I live in Lahore, I want, which is a sequence of words, I want the sequence of tokens or sorry, sequence of tags, meaning that the first tag should be pronoun, the second should be verb, the third should be
preposition, and the fourth should be a noun. Okay. So sequence length X and Y are of the same type, of same length. So we want to map X, the sequence of tokens from input to the sequence of tags. And we already have defined a fixed set of tags, just like in classification. So usually we'll have about, if you using the standard tags, about 7 to 8 tags, but the total number of tags can be quite large. So, so people have linguists as well as computer scientists have developed a large number of POS tags. So they can range from anywhere from 40 to even hundreds of POS tags. So fine-grained POS tagging can further subdivide nouns into proper nouns and common nouns, and of course verbs into auxiliaries and so on. So there's a lot of fine granularity in it. Depending on your application, you can define up to 100 tags or even more. So this paper, for example, in 2016 has characterized or classified some tags for POS tagging. But usually, as I said, about 6, 7 are the most common tags, and they would be applicable for many applications, useful for many applications. But if your application demands a larger number of tag set, then you should select a bigger set. So these are a couple of sentences in which you have the words followed by the uh, proper tags. And so there, in the first word, there is a pronoun. Word is a verb. 70 is a number. So, for example, num is also a POS tag or it's a word class. So, if you go to finer grained tagging, so num also becomes a word class. Children is a noun. So, this there at the end is now the same word, but because of its context, this is an adverb because it qualifies the word children. So, it's a kind of a position, indicating position, while the first there is a pronoun. So, so in this case, there is a word that may take on multiple word classes or multiple part of speech tags. So we have another example, and of course, we have a much larger tag set, to उसमें auxiliary भी है, other words भी, and so on. So this is the idea. So given a sequence of tokens or words, we want to get a corresponding sequence of tags. So why is part of speech tagging important even today? Of course, it was much more important, let's say 10 years ago. Now it's not that important because when you pre-train a large language model, उसने ये सारी चीजें oftentimes internally learn कर ली होंगी. आपको explicitly निकालने की जरूरत नहीं पड़ती for many applications. Implicitly वो उसको पता होता है कि ये word adverb है या adjective है या noun है या verb है and so on. Because we have trained it on a large amount of corpus using our causal language model or the mass language model. So parsing is an application which is still useful in some cases today, in which you break down a sentence into its constituent parts. And
those constituent parts may convey various meanings of that sentence, and how those constituent parts are located in a sentence would tell you more about their relationship or more about the meaning of that sentence. So parsing is again was an application that was quite popular 10-15 years ago. अब थोड़ी सी कम होगी primarily because of the same reason that I mentioned before. But इसके लिए of course you need to know which one is a noun, which one is a determiner, and so on, unless to break down a sentence. So machine translation में भी POS tagging important है because different languages have different orderings of POS. ठीक है? So मतलब again I don't have specific examples, but different Urdu and English, if you compare, verb usually comes after a noun in Urdu, but in English it comes before the noun. ठीक है? So इस तरह की चीजें, to do it in a better way, you need to know the POS tags. So machine translation. So sentiment analysis may be POS tagging quite important, and this is actually the one application which is still quite popularly used. Adjectives जो होते हैं, adverbs जो होते हैं, they convey meaning about reviews or sentiment. So adjective is usually a characteristics of a noun. तो ये कलर क्या था, ब्लैक था, ग्रीन था, रेड था, tall था, small था, heavy था, light था. So all of these are adjectives. So adverbs, let's say excessively, excellently, so slowly. So these are words that convey sentiments or effects of a running text, and you can use it for sentiment analysis. So sometimes you can even build a sentiment classifier just using nouns and adjectives and adverbs. बाकी सारे words drop करते हैं. So in other words, you can simplify your model. कर रहे हैं आप classification ही है, but instead of giving the complete sequence of words in the review, just limit it to the nouns, adjectives, and adverbs, and do the classification. You see that the classification would still be very accurate. But simply आपने कोई क्या कहना चाहिए word analysis करना है, तो then you need to find out which are the nouns, which are the adjectives close to it, and then do an analysis of it. For example, आपका एक कैमरा है, उसके करीब adjective आ रहा है heavy, so it means that people are saying that this camera is heavy. तो इस तरह के एनालिसिस करने के लिए you need to do POS tagging. So, so text to speech, which is speech synthesis. So, so live and live, for example, ये example मैंने पहले भी दी हुई है. Live is a verb, is pronounced differently. Live is, uh, uh, I think live would be an adjective, live match, for example. So, so that is pronounced differently. So, अब POS होगा तो फिर ही आपको text to speech को आप बता सकेंगे कि इसको किस तरह pronounce करना है. Again, similarly for read and read, past tense and present tense, that would be more fine-grained POS tagging. So that is also possible. But if you just do verb, तो read और read दोनों verb होंगे. So whenever you want to do a deeper analysis of language, POS tagging is often required because you often have to disambiguate between different tags for a given word before you can do further analysis. So obviously you like to compare verbs to verbs, not verbs to nouns or adjectives to adverbs. वो आप करेंगे तो फिर आप ये क्लासिफिकेशन करेंगे तो फिर ही आप कंपैरिजन कर सकते हैं. So how difficult is POS tagging in English? Of course, in different languages it may be different, but this is for English. So about 15% of words in English are ambiguous, meaning that they have multiple POS tags. Okay? So about 85% have well-defined fixed POS tags, and you typically don't have an issue there.
So there are examples in which you have words that always belong to one class. But there are 15% that are ambiguous. For example, the word book that we talked about earlier, for example, the word back. So back can have, let's say, multiple parts of speech. So back के example यहाँ दी हुई है. So back basically it could be referred to so different things. So back basically एक verb भी है, uh, so noun भी है, small building in the back. This is a verb. Majority of the Senate is backed a bill. So so this is buy back. Part क्या चीज होती है? I'm not too sure कि part क्या है. This is higher grade POS tagging. So adverb है, I was 21 back then. Again, so ये सारे अब ambiguous हैं. So you need to be able to label them in the proper way. But इसमें एक और चीज है कि in English again, ये जो 15% जो ambiguous हैं, इनमें जो majority जो ले रही है ना, वो आप क्लासीफाई कर दें तो आपके पास 85 से about 92% करेक्ट हो जाते हैं. So in other words, the problem is not that difficult. So 92% baseline एल्गोरिथम से आपको इजीली मिल जाता है इंग्लिश में. ऑफ कोर्स उर्दू के लिए ये इज नॉट दैट हाई, उर्दू में ये लोअर है. बट इंग्लिश के लिए अप टू 95 92% इट्स डन बाय यूजिंग सिंपल बेसलाइन एल्गोरिथम्स. So if you do apply a algorithm like an encoder based algorithm, transformer जो mass language model वाला मॉडल था हमारा, we can use that model. After the last layer आप एक classification head लगा दें over all the tags. So you will then be able to classify each word among those possible tags. So transformer, encoder, विच इज मास लैंग्वेज मॉडल प्री ट्रेंड है आपके पास पहले ही, उसको आपने फिर फाइन ट्यून किया है. तो फाइन ट्यून आपके पास अपना एक डेटा सेट होना चाहिए जिसमें आपके पास कुछ सेंटेंसेस हैं और उसके टैग्स हैं. तो वो आपने उसके नेटवर्क से गुजारे, क्लासिफिकेशन हेड से गुजारे और देखे कि वो सही कर रहा है कि नहीं कर रहा. नहीं कर रहा तो देन यू अडाप्ट द मॉडल. यूजली जो लास्ट लेयर है, जो क्लासिफिकेशन लेयर है, उसी को अडाप्ट करते हैं. सारे भी कर सकते हैं बट यूजली लास्ट लेयर को करते हैं to make it easier, and you typically get good classification 95% or higher. Usually humans also can do 95%, उससे बेहतर नहीं कर पाते. ठीक है. सो एनकोडर मॉडल, उसको आप क्लासिफिकेशन हेड लास्ट लेयर पे आप ट्रेन कर लें गिवन योर ओन ट्रेनिंग डेटा सेट. सो ट्रांसफर लर्निंग होगी, पहले प्री ट्रेन्ड मॉडल था, फिर आपके पास अपना डेटा सेट, तो उस पर आपने इसको फाइन ट्यून कर दिया. तो दिस इज फाइन ट्यूनिंग. So this is actually general slide telling you that, so how do you know which POS tag to use at a particular position? So this is all about language and grammar. And usually once you pre-train a model on language, much of this information is already encoded. You simply need to now fine tune it onto your own data set so that it can be more accurate. So you can go up to 97, 98% very easily, given a small data set that is labeled by you. And of course, many data sets are already available out there. Urdu के लिए भी हैं, English के लिए भी हैं, other languages के लिए भी हैं. So you can do that easily. All right. Any questions? So we have already talked about the standard agreement. In the older days, we used to use hidden markup models. और मैं पहले वो discuss भी करता था कोर्स में. अब मैं नहीं कर रहा इस कोर्स में. So nowadays we usually the transformer model, the encoder transformer model, or you can even use a recurrent neural network model and to do POS tagging.
Let's move on to named entity recognition. So named entity recognition is a similar problem. Of course, it's similar, but also slightly different. So the input is a sequence of words, and we want to label within that sequence of words those words that are part of named entities. So usually, of course, the original name was named entity would be a proper noun, and it could be a person, it could be an organization, or it could be a location. Okay? So we want to find in running test where the names of a person occur, where the names of an organization occur, where the names of locations occur. Okay? But nowadays, of course, the same idea can be extended to other types of, uh, you can say, entities. They are not really proper nouns. So you can even find prizes where prizes occur in running text, where, for example, uh, a specific, for example, date and time occur in a running text, where a specific, let's say, uh, actually, इसकी जो higher level है, we basically call it as semantic role labeling. So we want to find the role a particular word plays in a running text. Semantic role labeling. By the way, उसका chapter है textbook में, but again we are not going to discuss that in class. But इसी की extension है. So we want to find a particular role that a particular word plays in a sentence. So in this case, of course, we are restricting ourselves to named entities as well as some extensions like name, dates, sorry, date, time, events, and so on. So we want to find spans of text that belong, that constitute proper nouns or some entity, and then of course we want to tag it as a proper entity, which the type of entity, whether it's a location, whether it's a person's name, or whether it's organization. Okay. So this is a passage in which we have labeled the words. Uh, uh, so so this is, for example, United here would be an organization. United Airlines is a United organization. Okay. So we lead, and you notice that usually these are multi-word. Usually they will be multi-word, uh, not sing. Usually एक word भी बना सकता है एक entity, but they could be multiple words as well. So this is a slight difference from POS tagging. POS tagging में single word ही हमेशा होता है. यहाँ they could be multiple words. So United itself is not an organization. United Airlines is an organization. So this together should be tagged as an organization. So why do we want to do an NER, named entity recognition? Of course, this is a general task of information extraction. So given any running text, we want to extract our relevant information. तो आपके पास मे बी मल्टीपल कंपनीज का डेटा सेट है, डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें से देखने किन किन कंपनीज के नाम उसमें आ रहे हैं. सो यू नीड टू एक्सट्रैक्ट दैट इंफॉर्मेशन, या यू वांट टू एक्सट्रैक्ट डेट्स फ्रॉम, let's say, meeting logs that you have, or you want to extract names of persons that attended a particular meeting. So there could be various applications. So for example, इसको medical domain में the named entities could even be medicines names. तो हमारे पास एक मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन है, उसमें हमने टैग करना है कि कहाँ मेडिसिन के नाम आ रहे हैं, कहाँ पेशेंट का नाम आ रहा है, कहाँ डॉक्टर का नाम आ रहा है, डेट किधर आ रही है, टाइम किधर आ रहा है, एंड सो ऑन. सो
this generally is information extraction, and NER और इसका जो framework है, this is how we do it. So again, sentiment analysis may be relevant because in sentiment analysis we are talking about a product. So that product would be a named entity, and so we want to find all those products and the company names and persons that are talking about that product and so on. So question answering may important hai. You want to find the entity, and then maybe then you can focus on that entity in the question answer. So in general, as I said, it is information extraction. Depending on your application, you are interested in extracting relevant pieces of information from text. So NER is generally much harder than POS tagging. Okay? So there are two main reasons for this. One reason is that, of course, we are talking about named entities, pronouns, proper nouns. So the variety of proper nouns is huge. And people can come up with weird names for companies and weird person names and weird location names and so on. So it's not that easy to figure out uh, what entity we are talking about. The other problem is that, as mentioned before, usually we may have multiple words constituting one entity. So, so for example, Lahore University of Management Sciences are 5 words. If you just tag Lahore, so that would be a location, but together it was not location, it is a organization, in this particular say university. So by the way, ये जो टैगिंग है ये आप फाइन ग्रेन्ड और कोर्स ग्रेन्ड भी कर सकते हैं. तो मैंने कहा ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन को आप फर्दर कैटेगराइजेशन भी कर सकते हैं, whether this educational organization, a company, a manufacturing company, and so on. So that all depends on your application and the data set that you use to train or fine tune your model. ठीक है. So segmentation problem है, and then of course we are talking about proper nouns. There's a huge variety for that. ठीक है. तो typically इसको हम क्या करते हैं? We use what is known as biotagging. Okay. So we basically then instead of we use this tagging strategy which is called biotagging, B, I, and O tagging. So B stands for beginning, I stands for inside, O stands for outside. तो हर वर्ड के साथ हमने B, I या O लगाना है, and also a tag corresponding to which entity we are talking about. So let me show you here. ठीक है. So biotagging, for example, let's say हम organization की बात कर रहे हैं. So you have an org. So for example, Lahore. So this is beginning, B, university. This is inside of. This is also inside uh, management. This is also inside and sciences. This is also inside. And this complete सारे inside का जो B से I का सारा जो set है, this is one entity. और उस entity का type भी पता होना चाहिए. In this case is org. Is located in Lahore. ठीक है. So ये अब ये लाहौर जो है ये लोकेशन है, और ये ऑफ कोर्स बिगिनिंग एंड दैट्स इट, देयर जस्ट वन वर्ड इन इट. आई एन दिस इज नॉट पार्ट ऑफ एंटिटी, ये ओ हो जाएगा. दिस नॉट पार्ट ऑफ ओ हो गया, ये भी ओ हो गया.
ठीक है. सो दिस इज द टैगिंग. सो यू नोटिस दैट कि आपको टाइप ऑफ एंटिटी भी आइडेंटिफाई करना है. सो इन अदर वर्ड्स, आपके पास बी ऑर्ग भी है और बी लोकेशन भी है. ठीक है. और सिमिलरली आई ऑर्ग भी है और आई लोकेशन भी है. सो ओ ऑफ कोर्स कोई भी एक ही है. ओ एक ही है. सो इफ यू हैव, लेट्स से, एन एंटिटी टाइप्स, so location, organization, person, date, whatever. So let's say 4 है. तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ टैग्स बेसिकली 2 इंटू 4 इन प्लस 1, सो 9 टैग्स होंगे. तो दो बी एंड आई फॉर ईच ऑफ दोज टाइप्स, बिगिनिंग इनसाइड एंड ओ फॉर द अदर. ठीक है. So again, to do this, so you now we have a tag for each word. Now we have a tag for each word. It becomes similar to POS tagging. ठीक है. It becomes similar to POS tagging, and so we will have a labeled data set. Use it to fine tune a language model, usually a mass language model, and encoder model. ठीक है. जिस हमने POS tag के लिए किया था. So this is the way that you would learn this. And as I said, this problem is much more harder, and this problem also has more applications as compared to POS tagging today. ठीक है. Because in general this is information extraction. आपकी application dependent information extraction needs different हो सकती हैं. Medical application में different है, agriculture application में different है, and so on. Business application में भी different होगी. And you will have to in general create your own data set, or if the data set is already available out there, many are already available out there, and then use it to train or fine tune your model. So we have already discussed this. Okay, there is one more thing, but I think we are running out of time. 14, एक दो मिनट हैं, आज कर लें या. So there is one additional issue. I think I will mention it briefly, and वो 2 मिनट का ही काम है वैसे, but next time मैं फिर एक overview कर लूँगा. So how do you evaluation? So how do you evaluate POS tagging? So POS tagging is easy. So you simply accuracy, precision, recall, and F1 score. So POS tagging के लिए आप ये standard use कर सकते हैं. So very easy. So each word को, so let's say you have n words, ठीक है, and let's say t words are correctly labeled. So of course accuracy would be t over n. ठीक है. And of course इसी से आप precision भी निकाल सकते हैं. तो टोटल आपके पास जो आपके पास लेबल्स आए हैं, एंड जो आपके पास टोटल लेबलिंग जो की उसमें कितने करेक्ट हैं और टोटल एक्चुअल थे उसमें कितने करेक्ट है, वो प्रिसीजन रिकॉल आ जाएगी. दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये एफ मेजर बन जाएगा, F1 मेजर. बट एनईआर के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है. एनईआर में यू हैव टू डू एंटिटी बेस्ड एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, एंड F1. सो रिमेंबर क्यों ये करना पड़ रहा है, बिकॉज वी हैव द इशू ऑफ
तो लेट्स से जैसे ऊपर प्रॉब्लम थी लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस। लेट्स से मैंने जब इसको टाइगर चलाया तो इसने आ, ये पहला जो लाहौर था इसको इसने कह दिया लोकेशन। बिगिनिंग। और इसको कह दिया एंड सो ऑन। सो सारा ये लेट्स से ये ऑर्ग में डाल दिया। तो ऑब्वियसली दिस इज इनकरेक्ट। तो आपको जो लाहौर जो है वो इट वाज नॉट लोकेशन, इट वाज पार्ट ऑफ द एंटिटी नेम। So this is actually an error. But what type of error is it? Is it a false positive or false negative? Actually, it is both. Because हमारा एक्चुअल एंटिटी जो थी वो उसको उसने ब्रेक कर दिया, उसको एंटिटी को दो बना दिया। तो so as I said, you need to be careful in evaluating NER, and you need to evaluate by considering the full entity in your एनालिसिस। और सिंपल एक्यूरेसी करेंगे तो ये आपका एरर है। तो वन एंटिटी लाहौर यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट साइंसेज उसने डिटेक्ट की कि नहीं की? इसने डिटेक्ट नहीं की। ठीक है। सो दिस इज द एरर, एंड इसको थोड़ी सी ट्विकिंग करके आपके इसके प्रिसीजन रिकॉल मेजर भी निकाल सकते हैं। मे बी परहैप्स नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा मैं वो डिस्कस कर लूँगा, ऑल्दो दैट्स लेस कॉमनली यूज्ड, बट वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, सो आई थिंक आई विल स्टॉप हियर। 5 मिनट का ओवरलैप नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा, एंड देन विल स्टार्ट विद machine translation. All right, any questions?